Hello and a very warm welcome to SME Street viewers. Today is a very special day and a very special SME Street podcast. It's special because we have Miss Nivedittaa with us, and she's a life coach and a very inspirational example for most of us among those who are trying to get into the business and get into some level of impact creation. What inspires me and the entire SME Street team is her attitude towards adding value to the ecosystem that she is part of. Thank you so much, Nivedittaa. So, hello everyone, and thank you, Faiz, for inviting me for this talk that we are going to have regarding entrepreneurship and whatever you are talking about. And it's been a privilege and an honor to be here. Wonderful. So today's topic is stress management among young entrepreneurs. We have witnessed a lot of initial level challenges in business and economic value addition, and a lot of challenges are faced by young entrepreneurs. So today, Nivedittaa, we would like to hear from you about these aspects, how to manage stress in the business life and the work-life balance, stress management. So before we get into that, I would like to hear about your story, how you started, and what exactly compelled you to become a business lady. So, thank you, Faiz, for this opportunity. And my story is about a very simple girl belonging to a small town of Jammu. So, I'm from Jammu and Kashmir. And I got married at a very young age. I was 20 when I got married, and I settled into motherhood I was 21. And by the age of 25, I had both my children, a son and a daughter, who are both grown-ups now. And for 28 years of my life, I was a housewife, looking after the family and very happy in my domestic role, a very domesticated woman. And but I always had this thing that I have to do something once my kids grow up. My daughter got married in 2019, and in 2019, when she got married, I thought that I have to do something, and I started a co-working space in our family property, which by chance could not materialize because the day we did the Bhumi Puja, the day we did the puja, after 1 week the lockdown was announced. So that project just went into a fizzy because हम लोग उसको पूरा ही नहीं कर पाए. But ये सोचा कि घर पे बैठना नहीं है खाली, और कोविड में I ventured into professional life coaching skills. So I did certification courses, I worked with mentors, and I saw that this is something, लोगों को motivate करना, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, जहाँ पर आप किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. लाइफ कोचिंग के साथ पब्लिक स्पीकिंग ऑटोमेटिकली केम. आई स्टार्टेड गेटिंग पब्लिक स्पीकिंग असाइनमेंट्स, एंड एक पैशन सा बन गया ये सब काम करने का. सो लाइफ कोचिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए. सो आई लॉन्च माई मर्चेंडाइज, हैप्पीनेस मर्चेंडाइज. आई कॉल दैट माई हैप्पीनेस मर्चेंडाइज. सो एक हैप्पीनेस स्टोर क्रिएट किया जहाँ पर हैप्पीनेस मर्चेंडाइज, जहाँ पर मग्स, फ्रेम्स और हमने ग्रेटिट्यूड जर्नल्स, ये सब हमने बनाए. एंड बट द entrepreneur brain अब मेरा एक्टिवेट हो चुका था. सो लगा व्हाट नेक्स्ट. सो आई गॉट अ चांस टू गेट इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग. And I'm not a professional interior designer. For everyone's information, कोई कोर्स नहीं किया हुआ, but my passion of designing, और देखा मैंने कि ये तो बढ़िया से चल रहा है और काम अप्रिशिएट हो रहा है. So ventured into interior designing. इंटीरियर डिजाइनिंग के पहले प्रोजेक्ट में लगा कि ये जो फर्नीचर हमने बाहर से उठा के क्लाइंट को दिया है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है और बहुत महंगा पड़ा हमें. सो अब दिमाग में एक थॉट आया कि अपना फर्नीचर क्यों ना बनाना स्टार्ट किया जाए. सो टुक अ शेड ऑन रेंट एंड कारीगर बिठाकर फर्नीचर बनाना स्टार्ट किया. सो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 4.5 years की मेरी ये जर्नी है. सो आई वेंचर्ड इनटू लाइफ कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मर्चेंडाइज, interior designing and furniture manufacturing. Okay. So it just came out of a pure passion to do something for my own self. Wonderful. And when I started working, I saw that how important it is for a female to be financially independent. So वो सब जो factors थे वो सब अब contribute कर रहे हैं मेरी further growth के ऊपर. So this is how I started after being a housewife for 28 years. Wonderful, wonderful.
And you interact with a lot of young entrepreneurs, aspiring entrepreneurs, as well as existing entrepreneurs. Uh, what is the common stress level you observe in such cases of your interactions? And what is your suggestion to them in order to manage those stress? So when I interact with young entrepreneurs, the main thing that I notice, and when they speak to me, I observe is that they get lots and lots of discouragement from their own people. Okay. हो नहीं पाएगा, नहीं करोगे. And because when you are starting a business, एक startup है, उसमें पैसा तो चलेगा, लगेगा. तो वो एक इनसिक्योरिटी होती है उनके खुद के अंदर भी कि पैसा लगा दिया कहीं पैसा डूब ना जाए. एंड सेकेंडली घर वाले या फ्रेंड्स सर्कल जो मजाक उड़ाता है उनका, वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होता है. एक इंसान है जिसने एक अपने अंदर एक पावर लेकर आया है कि वो मेरे को कुछ करना है, मुझे एक 9 to 5 जॉब नहीं करनी है, आई हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर माई सेल्फ, एक एम्पायर क्रिएट करना है. तो दो चीजें होती है, एक तो जो डिमोटिवेशन मिलती है बाहर से which really pulls them down, और एक फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है. Exactly. ये दो चीजें जो सबसे कॉमन आती हैं. And how important is the mental well-being? इस पूरे एक्सपीरियंस में, इस पूरी जर्नी में mental well-being is something which is often gets ignored. तो वो कितना important है और उसके लिए what is your suggestion to such entrepreneurs? हार मान गए तो फिर क्या किया? जिंदगी में कुछ भी हो, it's not only business. हार मान लिए तो फिर तो डूब गए. So लहरों से डर कर नौका. बिल्कुल बिल्कुल. सिंपल सा एग्जांपल है टॉर्टोइज और हेयर का हमारा. Exactly. अगर टॉर्टोइज गिव अप कर देता तो फिर वो नहीं जीतता. तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. लगे रहो मुन्ना भाई, आई वुड से. एंड डेफिनेटली अगर आपके अंदर वो ग्रिट और डिटर्मिनेशन आप अपनी कायम रखेंगे, अगर कोई आपको नहीं भी सपोर्ट कर रहा, कोई आपको नहीं भी एनकरेज कर रहा, हमारा सोशल मीडिया इतनी एनकरेजिंग रील से भरा हुआ है, इतने सारे वर्ल्ड के दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर्स के फ्री में हमें 1-1 मिनट की रील्स मिल जाती हैं खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए. एग्जैक्टली. सो बहुत सिंपल है. एग्जैक्टली. निवेदिता, आप अपने कॉन्वर्सेशंस में, अपनी काउंसलिंग में आप सेल्फ केयर के ऊपर भी बहुत ध्यान देती हैं, सजेस्ट करती. सेल्फ केयर बिजनेस ओनर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है? क्या कैसे हो सकती है सेल्फ केयर? दो चीजें बोलूंगी मैं, एक सेल्फ केयर और एक सेल्फ लव. क्योंकि सबसे पहले तो खुद से प्यार कीजिए ना. खुद से प्यार करेंगे तो अपने उस पैशन के साथ इतना प्यार होगा आपको. और उसमें केयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी. यू हैव टू लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ. एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कहीं पे पहुंचना है. तो लाइफ के जितने भी अचीवर्स आप देख लीजिए, लेट मी टेक द केस ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन. आज भी उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी डेडिकेशन, उनकी जिमिंग का टाइम, आज भी, एंड ही इज लाइक हैविंग सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो वो मीडिया में नहीं आने देते हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको, हेल्थ इश्यूज हैं, बट आप देख लीजिए अमिताभ बच्चन वर्जन 2.0 is more successful than Amitabh Bachchan version. Even 3.0 is also wonderful. Yes. हम चाहेंगे कि वो इतने सारे एग्जाम्पल्स सोसाइटी में या हमारे पब्लिक स्पेस में हमारे पास हैं जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं. मेरे को तो ये लगता है he can do it, why can't I do it? क्या फर्क है? सुबह मैं भी उठ सकती हूँ, जिमिंग, एक्सरसाइज, वॉक, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, थोड़ी सी ओम की चैंटिंग में सबको सजेस्ट करती हूँ, जरूर करो. एंड लुकिंग एट योरसेल्फ इनटू द मिरर. कोई दिन होता है जब हम बहुत लो फील करते हैं. सो आई शेयर समथिंग वेरी पर्सनल कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी आफ्टर बीइंग अ हाउसवाइफ फॉर सो मेनी इयर्स, तो मैंने मरीसा पियर का एक रील देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अपने मिरर पे जाके लिख दो आई एम इनफ. और मैंने एक मार्कर लेके बोल्ड में लिखा हुआ है आई एम इनफ, इट इज स्टिल देयर. तो वो मैं रोज जब उसको पढ़ती थी तो मैं वो पढ़ा. सेकंड मैंने सेंटेंस अपने मिरर पे लिखा, सक्सेस इज माय ओनली ऑप्शन. तो ये दो सेंटेंसेस ने मुझे इतना मोटिवेट किया. तो व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, तो फिर अपने आप को एक शेर की तरह देखिए, फिर एक छोटी सी बिल्ली की तरह नहीं देखना अपने आप को. सो दैट सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. बिल्कुल. तो ये इस तरीके के इश्यूज लेकर के बिजनेस ओनर्स आते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द रोड मैप उनको आप जो सजेस्ट करते हैं? मतलब व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे फेस इन एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग योर सजेशंस? सबसे बड़ा चैलेंज, एक ही चैलेंज आता है, माइंडसेट.
जी बिकॉज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड हम लोगों की जब अपब्रिंगिंग होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजों की कंडीशनिंग बैठ जाती है। और उसमें सबसे पहले एक सेंटेंस है जो शायद आपने भी बचपन में सुना होगा, मैंने भी सुना हुआ है, सब लोगों ने सुना होगा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कितने लिमिटिंग बिलीफ है ये। अब वो बिलीफ बचपन से बच्चा सुन रहा है, टीनेज में सुन रहा है, बड़े होके सुन रहा है, तो उसका मनी माइंडसेट कितना लिमिटेड हो जाएगा। तो जब उस माइंडसेट के ऊपर मैं काम करती हूँ तो मैं इस पूरे पेड़ को ही हटा देती हूँ। तो वहां पर मैं जो पेड़ फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड में उगने देती हूँ या उगाती हूँ, वो होता है कि मेरे लिए तो ये पेड़ पे पैसे लगे हुए हैं, आई कैन ऑलवेज एक्सटेंड माई हैंड एंड टेक हाउ मेनी डॉलर्स, यूरोज और रुपीज आई वॉन्ट। सो मैं उस पेड़ को लिमिटिंग पेड़ के बजाय एक, वो कहते हैं ना, फ्रूट गिविंग पेड़ में कन्वर्ट करती हूँ। वो माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट उसमें आपके चाइल्डहुड कंडीशनिंग को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, which is through some, yes, which is through some tests which I work with them, some processes, some strategies, because one shoe size does not fit all, तो थोड़ा सा कस्टमाइज भी करना पड़ता है मुझे। वेरी गुड। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आप का एक रोड मैप रहता है और एक सजेशन रहता है। सो व्हाट एग्जैक्टली, ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट एज यू हैव राइटली मेंशन्ड के सेल्फ केयर और सेल्फ लव में ही यू हैव टू इंक्लूड दिस। बट नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस ओनर्स जब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, सो दे हैड टू रश टुवर्ड्स न्यू बिजनेस, टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड दोज काइंड ऑफ स्टफ। In such commitment or in such run, they tend to lose a lot of, timelines. उसमें उस स्ट्रगल से गुजरने वाले बिजनेस ओनर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। जैसे कहते हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, वैसे ही डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ। So when you get up in the morning, you get some time for your own self. जो मैंने आपको बातें बोली हैं, 5 मिनट की ओम चैंटिंग कर लो, सिंपलेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन है। 10 मिनट के लिए आपको योगा स्ट्रेचेस कर लीजिए, so that your body is energetic throughout the day. And when you start your work, एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, उसमें क्या होता है, बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने फोन को साइलेंट पे रख के, उल्टा करके उसको, एक काम को कंटिन्यूअसली 20 to 25 मिनट्स के लिए आपने करना है विदाउट अ ब्रेक। देन टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, उठो, एक चक्कर मारो, पानी का ग्लास पियो, एक गाना सुनो, देन अगेन सिट डाउन एंड वर्क फॉर अनदर 20 to 25 मिनट्स। अगर आपने दिन में 2 घंटे भी इस टेक्निक को यूज कर लिया, आप कहोगे हम बाकी का पूरा दिन तो फ्री हैं, बिकॉज फोकस्ड जब आपने वो टाइम दे दिया अपने बिजनेस को, आपको पता भी नहीं है कि आप कितना कुछ उसमें अकम्प्लिश कर जाएंगे। So 2 टेक्निक्स, एक तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठो टू गिव टाइम फॉर योर सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, एंड सेकंड, आई स्ट्रांगली फील कि पोमोडोरो टेक्निक तो हर बिजनेसमैन को यूज करनी चाहिए, so that you get time for yourself, your family and your other social activities also. So इसमें एक और चीज होती है, जब बिजनेस ओनर्स या बिजनेस यंग एंटरप्रेन्योर्स या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, when they look up to their peers, when they look up to certain role models, and then they try to chase, और उसमें भी एक तरीके का स्ट्रेस लेवल क्रिएट होता है कि अरे वो कर रहा है, व्हाई कांट आई, फलाने के पास में ये वाली गाड़ी ले ली है, धमाके के पास में ये एसेट बन गया है, मैं अभी भी इस पे हूँ, ऑल्दो आई एम वर्किंग, आई एम ऑन द रोड मैप। तो ऐसे सिचुएशंस में आपकी क्या रहती है सलाह? देखिए, रश में है सारी दुनिया, और यंग बच्चे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर में रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द सोशल स्टेटस दैट दे आर सीइंग अराउंड देमसेल्व्स। किसी ने मर्सिडीज लिए तो मुझे भी लेनी है, लेकिन उसके पीछे उसका क्या कितना स्ट्रगल और हार्डवर्क क्या है वो नहीं दिख रहा है। एक एग्जाम्पल है, हम लोग जब बांस को उगाते हैं, बैम्बू ट्री की एक एग्जाम्पल देते हैं, तो 5 साल तक कुछ भी हमें ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर नहीं दिखता है, बट 5 साल के बाद एक बैम्बू का प्लांट 9 वीक्स के अंदर जो हाइट पकड़ता है, तब जाके पता लगता है कि अंदर रूट्स उसके कितने गहरे थे कि वो एक हाइट पकड़ी है। सो व्हेनेवर यू आर इनटू बिजनेस, यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले तो अपने आसपास देखना बंद करो, फोकस ओनली ऑन योरसेल्फ। पीयर प्रेशर हर एज ग्रुप में आएगा और उसको आप खुद ही फाइट कर सकते हो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करके।
And success is, इतने सारे examples हैं. Boman Irani started at the age of 41. Colonel Sanders, KFC, he started at the age of 65. KFC was launched at the age of 65 when Colonel Sanders was 65 years of age. तो बहुत सारे examples हैं. हर एक की अपनी journey है. Concentrate only on your journey. आसपास से focus हटाएंगे तभी अपने business पे focus करेंगे. Exactly. नहीं तो distractions रहेंगे. Nivedittaa, you have also been talking to a lot of women entrepreneurs. So we will touch upon these aspects influencing the experience or the roadmap for women entrepreneurs. But before that, I must tell SME Street audience that Nivedittaa is also ambassador for SME Street Women Forum, which we have started few months ago, and she's actually taking care of the Northern India line of activities, and we are very excited to have her from the perspective that she understands the women entrepreneurship and the enablement of the society through women. Enablement of the society through women. It's slightly different from women empowerment. So, Nivedittaa, how do you look at these aspects, stress management, peer pressure, among the women entrepreneurs which you interact with? It's not easy being a woman entrepreneur, to be very honest, because right from the time we get married or we have grown up, there are lots and lots of expectations from females regarding so many different duties and responsibilities. So at times I come across women entrepreneurs who do not have 0.1% support from the family, neither from the husband nor the in-laws. Or the kids are very small, they have to look after the kids, and then they are expected to do all the household work also, be there for all the responsibilities. तो वो एक extra pressure मैंने देखा है female entrepreneurs के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर फिर कई बार वो लोग हार के ना they give up on their dreams, which I feel is not fair because हर को सपने देखने का हक है. So if the family comes forward and supports the female also, the same way when the female has been supporting the men in the family right from the beginning, be it their fathers or husbands or brothers or sons. So I would expect all of them to come forward and support her. Exactly. And एक female के अंदर इतनी power होती है, थोड़ा सा उसको धक्का देंगे ना, तो आप देखो वो कैसे दौड़ती है. Exactly. But there's a perspective, I have a slightly different perspective. Women entrepreneur, yes, they have to do, and they do something extra than a, man entrepreneur, I must say. Having said that, but on the entrepreneurship turf, it is the product or the service or the business which have to perform. So honestly speaking, having a product, introducing a product, managing it for the market, उस पूरे ecosystem को create करना is the same job which anybody is expected or supposed to do. How do you look at this creation journey for a woman, especially when she's having an extra layer of required legwork, which is managing house and managing time as well? Support from the family is a very big thing. Support. When I started my entrepreneurial journey, I have a comfortable financial background. तो मुझे सबसे पहले family members from my friend circle also and from other family members also सबसे पहले यही आया था, तुझे क्या जरूरत पड़ी है कुछ करने के लिए, सब कुछ तो है तेरे पास. It is not about कि क्या जरूरत पड़ी है. It is about I want to do something. It's as simple as somebody else wanting to do something. तो जरूरत की बात नहीं होती, कई बार वो आपके खुद की एक फायर आपके अंदर होती है, एक पोटेंशियल होता है जो एक अर्ज के साथ बाहर आना चाह रहा होता है. मैंने बहुत अच्छे नेचुरल पेंटर्स देखे हैं, मैंने बहुत अच्छे ऐसे फीमेल्स को खाना बनाकर यूट्यूब पे डाल के देखा कि उनकी होम किचन इज सो सक्सेसफुल, बट दे हैव हैड टू शट डाउन बिकॉज दे बिलोंग टू गुड रिस्पेक्टेबल फाइनेंशियली साउंड बिजनेस फैमिलीज, जहाँ पर फादर इन लॉ ने मना कर दिया या जहाँ पे हस्बैंड ने मना कर दिया, यू आर कंफर्टेबली प्लेस्ड बट सी दैट टैलेंट इज लाइंग डेड. वहां पर थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट हमें बहुत जरूरी होता है. एंड obviously because the men folk are more into the market and they know more about how things work, they can always support in the product management and the product creation. तो थोड़ा सा अगर पता लग जाएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है.
When I came into my entrepreneurial journey, trust me, मुझे एक बैंक अकाउंट का भी नहीं पता था कि एक बैंक अकाउंट कैसे बनता है. I learned बैंक अकाउंट क्या होता है and net banking at the age of 48. मुझे सेल्फी खींचना नहीं आता था, मुझे स्नैपचैट नहीं पता था. At the age of 48, I installed WhatsApp in 2020. मैंने WhatsApp इंस्टॉल किया. मैं सोशल मीडिया से दूर रहती थी, बट नाउ आई सी द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन बिजनेस, इन ग्रोथ, इन लर्निंग. लोग सोशल मीडिया की बहुत बुराई करते हैं, टाइम वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है. टाइम वेस्टेज नहीं है, अगर आप उसको प्रॉपरली कंज्यूम करोगे कंटेंट को. देयर इज सो मच ऑफ लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम इंस्टाग्राम. आप क्या उसमें से सिलेक्ट करते हो देखना. सो बहुत सी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन हमें एक सपोर्ट की जरूरत है. When I got an account made on Snapchat, I did not make that account on Snapchat. My son made just for fun sake. मैंने 3 बार डिलीट किया, but then I learned how to operate Snapchat. तो थोड़ा सा ये सपोर्ट जब मिल जाता है और जब वो बिजनेस एस्पेक्ट से भी मिल जाता है, तो सीख तो हर इंसान लेता है. दिमाग तो सबके पास है. Thank you so much. In fact, ये मैं भी viewers को बताऊंगा कि today you have taught me some tricks for taking selfie, a good selfie, which is a skill which I am yet to evolve. और thank you so much. Remember, practice makes a man perfect. तो रोज आपने 10 सेल्फीज लेनी है, मुझे भेजनी है, मैं करेक्शंस करूंगी. फिर आप बिल्कुल पास होंगे उस टेस्ट में. बिल्कुल उसका एक बेसिक थ्रेशोल्ड होना चाहिए. स्पार्क का आपने जो बताया, बिजनेस में या किसी भी चीज में, लाइफ में एक स्पार्क होना बहुत जरूरी है. तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट कि मैं किस चीज के पीछे जाऊं जो विच कैन ऐड वैल्यू, और इज इट वर्थ इट? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत आता है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, उनके माइंड में, कि I know this is something like, for example, kitchen, for example, cooking. I know there is a special skill set that I possess, but is it worth pursuing that? What is the formula? What is the suggestive roadmap for them? So I will tell something which worked for me, जो मैंने अपने point of view से सोचा था, and I think it's going to help so many other entrepreneurs, rather women entrepreneurs, to identify ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप अपने आखिरी सांस तक करना चाहते हैं और आप थकोगे नहीं. For me, it is life coaching. I can see myself even on my last moment in life transforming somebody's life. कुछ motivation, कुछ ना कुछ बोल रही हूँ. So this is something which is a passion. So, and designing, it comes very naturally to me. इट इज नॉट इंटीरियर डिजाइनिंग. अगर मेरे को आज आप बोलेंगे एक ड्रेस डिजाइनिंग का आप अपना लेबल लॉन्च कर दो, आई विल वेरी हैप्पीली डू इट, बिकॉज आई लव कलर्स, आई लव so this entire studio has been designed by me. So I love colors, I love designing, I love concepts, उसके ऊपर बात करना. So कोई भी ऐसी चीज जो आपको, जिसके बारे में बात करके आप थकते नहीं हो, सोच के थकते नहीं हो, आपको लगता है कि यार आप अपनी आखिरी सांस तक कर सकते हैं, तो that is something how you can identify. Exactly. एक दिन मुझे याद आ रहा है, 2 साल पहले की बात है, तो रात को 11 साढ़े 11 का टाइम था, तो my son came and we were just having a chit chat and I started telling him about my work. So कुछ लाइफ कोचिंग की मैं बात कर रही थी, किसी क्लाइंट का मैं बात कर रही थी, ये क्या है, ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, एंड कुछ मेरे इंटीरियर प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रही थी. एंड he just said one thing after listening. 15-20 मिनट मैं लगातार बोलती रही, and he just said one thing कि मम्मा एक चीज सुनी थी कि when you're passionate about something, आप थकते नहीं हो. रात के 11:30 बजे हैं और आप इतनी एक्साइटमेंट के साथ अपने दोनों बिजनेसेस की बात कर रहे हो. दैट मीन्स कि आप कितने पैशनेट हो अपने काम के लिए. दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड दैट आई लव बोथ माय वर्क्स. सो दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग एविडेंस. यस, वेरी स्ट्रांग एविडेंस, बेंचमार्क, थ्रेशोल्ड, कि जब आप किसी भी चीज को लेके पैशनेट हो और आप उसके बारे में बात करने से नहीं थक रहे हैं और आप सोच रहे हो कि लाइफ के एंड तक मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, दैट इज द इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई. तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि ये सारे इंडिकेशंस होते हैं, बहुत कई लोगों में होते हैं एंटरप्रेन्योर्स में, जिसमें मतलब ज़्यादा स्ट्रांगली है वो एंटरप्रेन्योर बनने के उनके पूरे चांसेस हैं और वो परस्यू करें. इसके साथ साथ आज like in 2024 in today's scenario, we have also seen a lot of ecosystem around us, which is finance, which is banking, which is about
accessing, network which can give you, strength to get into this journey. तो ये सारी जर्नी में जाहिर सी बात है SME Street is also there to support, to help in order to create an ecosystem. What is actually expected from a business owner or an entrepreneur is to focus on the core, and to focus on the core, maybe understand the spark. Maybe you have to motivate yourself and understand this particular sparking element which is making you restless, and then pursue. So, Nivedittaa, it's really a wonderful, discussion we had, and definitely we would like to have more such sessions, and we'll have a series of conversations on various topics also, because the expertise and the handholding you are doing to the to your network, it must be leveraged to extended in a larger family. I personally feel that I feel very proud to be a part of SME Street. Thank you for welcoming me in your family and giving me this important role, because if we particularly talk about female entrepreneurs, they need a lot of support, and they need good role models around them, and they need that network, that sisterhood to pull each other up. क्योंकि रोज कोई ना कोई चैलेंज आता है उनकी लाइफ में, तो एक वो अच्छा बहन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. आई एम टॉकिंग इन लेमैन्स लैंग्वेज. कोई बात नहीं, ये कल मेरे साथ हुआ था, कोई बात नहीं, मैं निकल आई इसमें से, तू भी निकल आएगी इसमें से. So that support, and I congratulate SME Street on this creating this wonderful platform for, especially for women entrepreneurs, because I feel that a strong woman is the only power that a family needs, and a strong woman can upbring strong children. Absolutely, and I would like to go a bit beyond this point. A strong woman adds value to the society, adds value to the ecosystem, to the economy as well. And any economy which is doing good in our understanding anywhere, could be in Europe, could be in West, or could be emerging economies in other parts of the world. Role of women is inevitable there, and must be acknowledged and motivated. दो बहुत strong example women entrepreneurs who've been housewives and mothers आ गए हैं. एक तो I respect that lady a lot, Mrs. Indra Nooyi. Yes. See, she's got a very strong story, and वो भी mother रही हैं, वो भी housewife रही हैं, घर भी manage किया, business भी, and कितनी high position पे पहुंची हैं. And second मेरे नाम पे आ रहा है विकी की जो president है हरबीन राय अरोड़ा. See how strongly she has created a strong network. So we've got very strong role women leaders around us, जिनको we can always look up to them, learn from them. And मैं तो फिर एक ही बात कहती हूँ कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? If they can do it, I can also do it. Absolutely, absolutely. So thank you so much, Nivedittaa, for joining, and thank you so much, the wonderful audience, for listening to us. You can approach us through our email or through our numbers, which are actually in the description, and can connect with us for any other query which would be coming across. Thank you so much. Thank you so much.